क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। Hello, hi everyone. Welcome back to another conversational style video with CoinDCX. It's me Ria and I have Sudeshna here with me today. और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है Web3 गेमिंग. So all the gamers out there, everyone who's wanting to have interest and have fun in the space, तो gaming is the way to go. तो आज हम गेमिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं. थोड़ा सा हम ओपिनियंस देखेंगे. सुदेशना के पास जो भी क्वेश्चंस है, we'll discuss that. क्या चल रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में, वो सब चीजें बात करेंगे. तो शुरू करते हैं. हाय सुदेशना, हाउ आर यू? Hi Ria, I'm doing great. आप बताओ आप कैसे हो? Hi everybody. So just cutting straight to the questions that I have from lot of my gamer friends. So a friend of mine, he's into gaming and all. So recently he started getting into Web3 gaming. तो वो मुझे play to earn games वगैरह के बारे में पूछ रहा था. तो I didn't have उतना ज़्यादा knowledge. So before I ask the main questions that he has asked me to ask you, आप प्लीज बताओ ये प्ले टू अर्न गेम है क्या एंड हाउ डू दीज फंक्शन, काम कैसे करते हैं ये प्ले टू अर्न गेम्स? ओके, तो बेसिकली गेमिंग ऑन द Web3 space is and where you play and you get rewards for it, like it's a shared economy, right? So what happens in a Web2 game is you just play and it's a centralized game, so the assets are owned by the game. Anytime your access can be revoked because it's not your account. तुम खेल रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे, मगर लेट्स से बहुत आसान भाषा में समझे तो लेट्स से मैं कोई एक गेम खेल रही हूँ जहाँ पे मेरे पास स्वॉर्ड्स हैं या फिर स्किन्स हैं, राइट? वो मैं खुद ओन नहीं करती हूँ, वो गेम के एसेट्स है, इन गेम ही मैं उनको यूज कर पाती हूँ. तो Web3 गेमिंग में क्या है कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे NFTs, राइट? सो जो भी आपके एसेट्स है, सपोज कोई कार है, सपोज कोई स्किन है, दे आर NFTs. तो वो पहली बात तो आपकी होंगी, यू होल्ड दैट इन योर ओन वॉलेट, आप अपना समझ के उसको होल्ड करते हैं. एंड दूसरी चीज कि आप उसको किसी और गेम में भी लेके जा सकते हैं इफ द फंक्शनैलिटी इज लाइक दैट. मतलब अगर वो गेम्स अलाउ करते हैं तो बिकॉज इट्स योर एसेट, यू कैन, इट्स सॉर्ट ऑफ इंटरऑपरेबल एस्पेक्ट उसमें आ जाता है कि हाउ NFTs कैन बी यूज्ड. अगेन आजकल गेम्स में इतना ज्यादा नहीं है, बट इन द फ्यूचर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ओपन अप क्योंकि NFTs आर बीइंग यूज्ड एज एसेट्स, राइट? एंड सेकंड थिंग इज दैट क्योंकि सेंट्रलाइजेशन नहीं है, राइट? एवरीवन्स हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और जो भी एसेट्स है वो सब शेयर करते हैं. तो यू ऑल्सो earn while you play, so that's why I play to earn games. So this is as simple as it gets as to what play to earn games are. And very Oh, cool. interestingly, one more study says that this, like 2022 में जितनी भी blockchain activity हुई है, बहुत ज़्यादा, like 50% of that happened on the gaming aspect of things. So it's a huge market. So you guys should try play to earn games if you've not already. हाँ, like when I was reading about Web3 games, मेरे को पता चला that Polygon भी कुछ zkEVM निकाल रहा है and it is partnering with Immutable X, जो gaming Web3 gaming world में काफी बड़ा नाम है. तो what do you know about this and what is it actually? What is it happening? So Immutable X, as known as one of the biggest games out there, and Polygon having so many partnerships already with the gaming industry. इतने सारे partnerships है, right, Polygon के. But with this they're coming up with a blockchain जहाँ पे वो zk technology का help लेंगे, and वहाँ पे जो games build up होंगे, they'll be much faster, much easier to scale, right? So it's a blockchain that they've come up with जहाँ पे games को help होएगा to deploy on the blockchain and to run, because now this is, so थोड़ा सा समझाने का अगर if you allow me to explain this to the audience, zkEVM, right, is what it uses. So zk is zero knowledge. We've heard zk and zk rollups. So it's essentially like you're verifying, it's a way to verify when you have an underlying blockchain and तुम उसकी security ले रहे हो. So that's how layer 1 to layer 2 जब आप conversion करते हो, that's one thing. And EVM is Ethereum virtual machine, as where you deploy your smart contracts and where you put up your dApps, so to say. तो zk की help से एक ये blockchain बना रहे हैं, and it's going to be easier for games now, क्योंकि scalable हो जाएंगे games, ज़्यादा faster transactions रहेंगे. तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के they have to,
one of the biggest, like both are very big partners, right? And they've come up to collaborate on this thing. So this is a pretty big event, so to say. So I should tell my friends that they should be really hyped up around this कि कुछ तो Yeah. बड़ा हो रहा है Web3 गेमिंग में. Cool. Correct. So जैसे आपने बोला that NFT Web3 गेमिंग का काफी important part है, like it is actually around the entire Web3 scenario is around, like Web3 gaming scenario is around NFTs and everything. So recently I also read that Sony is partnering or it has patented some NFTs where it is aiming to, make those NFTs work on TVs, not just PlayStation and gaming consoles, but on smartphones and everywhere. So please enlighten us about that. Yeah, it's like you said, Sony, the biggest company out there, when we talk about these things, and they have PlayStation, which is the most sought out for, right? So, ये लोग अब NFTs लेके आ रहे हैं, so it's a pretty big deal, right? So, they've patented this, and now you will be able to move your assets and, also computers or, VR headset that you're using. So, these will be sort of put into an NFT and can be used on different platforms and different games altogether. ऐसा भी है कि PS4 to PS5 also the conversion can happen. So let's just see what happens. But Sony announcing this is a very big deal, I think. But let's wait and watch कि और क्या होता है इस space में. But I think these two have been one of the biggest news आजकल, which has hyped so many people कि अच्छा, नई चीजें हो रही हैं gaming industry में NFTs के साथ साथ. So let's see when the NFT or the Web3 gaming का boom comes up again. उस time पे ये चीजें important काफी ज्यादा रहेंगी, and these are I think very seeds sowing for that space to come Yeah, up. exactly. Because Right. like 2021 में NFT was the buzzword. Everyone was getting into NFT, चाहे वो बड़ी companies हो या बड़े celebrities हो. Although 2022 was a lull period for NFT, we didn't see a lot of development. But फिर still companies, be it gaming industries and non-gaming industries, they are also getting into NFTs. So I think that these are actually जो आपने बोला that these are the seeds being sown which will be reaped later. Got it. I think एक और चीज जो क्वेश्चन हमें बार बार आता रहता है कि if someone's wanting to start their own game in the Web3 space, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. और बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि गेम्स फेल क्यों होते हैं. So games do come in the space, Web3 games do come in हाँ the हाँ space, they fail, right? तो I think 3 मेजर चीजें हैं जो important हैं और ध्यान में रखनी चाहिए why a game would fail in the space is, I think firstly bot action बहुत ज्यादा हो जाता है because it's a game, a lot of bots attack yeah, player bots. right. तो bot activity बहुत ज्यादा important रहती है इन सब चीजों में, right, to control the mishappenings. Second is that कि जो हमारा इकोनॉमी है गेम का वो ज्यादा इन्फ्लेट ना हो. जैसे आपने क्रिप्टो किटीज में देखा होगा, राइट, कि बहुत सारे एनएफटीज आ गए, बहुत सारे क्रिप्टो किटीज आ गए, एंड नाउ द वैल्यू इज लेस. इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन हो जा रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ disbalance in the economy. And I think third and the very important thing I always tell people who are building in the space, who are building games in the space, is that keep it fun. Even if you keep it play to earn, whatever are the major things that you think you can attract audience to, agar fun nahi hoga to wo sab cheeze useful nahi hai, right? Because fun is the primary motive of a game. Like you can play it for 2 hours, 3 hours just to earn, but then in the longer run fun element hona chahiye, and that's what defines a game, right? So aap banaiye decentral games, Web3 games, but make it fun so that people come back. There's this stickiness or the retention of people wanting to play the game. तो fun नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करती है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं who for the namesake were games, but चली नहीं क्योंकि मजा नहीं आया लोगों को खेलने में. और गेम्स का तो पॉइंट ही वही है कि थोड़ा मजा भी आए और चलो बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं. तो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से हमेशा ध्यान रखना कि फन होना चाहिए गेम, और लोग आए एक दूसरे को बताएं कि भाई ये गेम खेला मैंने, बहुत सही था, रहे. तो unless that happens, it's not a game ideally. So I think these are the 3 things that I would tell everyone कि मेजर पॉइंट्स ये हैं जहां पे गेम बिगड़ता या बनता है, तो ये चीजें रखेंगे दिमाग में, तो आई थिंक एवरीथिंग सॉर्टेड.
Yeah, so to all the gamers and the developers out there, you exactly know what to do now with your Yes. Web3 games. Right. And also, guys, let me know what's your favorite, Web3 game. What do you play? What are you interested in? तो हमें comment section में बताओ जल्दी, ताकि हम भी पता करें कि क्या game आपको favorite लग रहा है, क्या उसमें important चीज़ है वो भी बताओ कि क्या अच्छा लगता है आपको एक Web3 game में. So, Deshna, any comments for the users? Or, No, please अपने सारे top 3 games बताओ comment में, मैं भी खेलूं यार, मैं भी थोड़ा play करके earn कर लूं, मेरे लिए भी सही हो जाएगा. Cool. I think that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching. अपने जरूर कमेंट में डालना फेवरेट गेम्स एंड विल सी यू इन अनदर एपिसोड. अपने क्वेश्चंस भी डालना फॉर द नेक्स्ट एपिसोड सो दैट वी एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइस. बाय बाय. Bye. Thank you. क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं. ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो.